हर 4 मिनट इंडिया में कहीं कोई ना कोई व्यक्ति खुदकुशी के जरिए अपनी जान लेते हैं. In India, 1 out of 7 people have mental health problems, whether it's anxiety or depression. But mental health problems आदमियों को कई ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. डेटा के अनुसार 2015 में 1,34,000 लोगों ने अपनी हत्या सुसाइड के जरिए की. इसमें से 68% were men. According to global data, men are 12% less likely than women to go out there and seek therapy during times of emotional distress and upset. ऐसा क्यों है? What is leading so many men to die by suicide in our country? Mental health. एक ऐसा विषय जो हम आदमियों और लड़कों के साथ बिल्कुल जुड़ते हुए नहीं देखते और ना ही उस मुद्दे पे कोई बातचीत करते हैं. आइए देखते हैं ऐसी क्या इश्यूज हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा करनी चाहिए. सबसे पहला इशू है सेक्सिज्म. रिसर्च शोज दैट मेन आर डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और अन्य ऐसे इश्यूज के वो भी विक्टिम होते हैं. कल्चर. ये जो कल्चर है और ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये रूटेड है इस रिसर्च में कि बचपन से ही बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से बॉयज आर मोर वल्नरेबल to any sort of mental health disorders. So male children are more prone to stress, especially the stress that comes in the womb of the mother, anxiety due to separation from the mother, and any sort of unresponsive caregiving. And by the time they're 1 year old, boys react far more sensitively to negative feelings around them. मैं आपको लेके जाती हूँ अब स्कूल के प्लेग्राउंड में. स्कूल के प्लेग्राउंड में यही बातचीत होती है. सारा टाइम जब बच्चे वहां खेल रहे होते हैं, बॉयज को हम पुश करते हैं कोई एक्टिविटी करें, किसी तरह से compete करें, एक दूसरे से कोई वीक या इमोशनल बातचीत ना करें. एज अ रिजल्ट men are not even talking about emotions. इसी बातचीत को अगर हम लड़कियों को बढ़ते हुए देखें, लड़कियां काफी खुल के बातचीत करती हैं, मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ. तो बातचीत और गपशप के थ्रू जो उनकी फीलिंग्स वेंट आउट होती हैं, उससे उन्हें काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनने की हिम्मत मिलती है. आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, बट आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑलमोस्ट 1 in 5 men, which is 18%, have owned up to not having even a single friend. इसका नतीजा, boys even in their teen and young ages start thinking about alcohol, drug, anger and all of those symptoms. If you look at India, 53% of sexual abuse incidents each year are crimes against boys. But boys are far less likely to reach out for any support or help as survivors of sexual violence. इतना डेटा, इतना रिसर्च, हम कर क्या सकते हैं? The solutions start with us. Many of them start at home. सबसे पहले पेरेंट्स. क्या पेरेंट्स अपने लड़कों से काफी encouragingly बातचीत कर सकते हैं? Can they talk about feelings, sadness, happiness and upset? That is really important. In fact, मैं ये कहना चाहूंगी, हमें उस हद तक जाना चाहिए जिस तरह हमारी फुटबॉल क्लास होती है या म्यूजिक की ट्यूशन होती है. इस तरह क्या हम अपने आप फैमिलीज के साथ 2 घंटे हफ्ते में एक फीलिंग्स आवर निकाल सकते हैं. क्या चीज? फीलिंग्स आवर. जब हम खुल के अपने मन की बातचीत करें. Fathers. Our fathers have to be seen as people who will go out there and become role models as those who reflect their feelings and talk about how they feel and not just what they do. So when it comes to talking about whether they are missing their mother or they want to call a family catch up because they feel that they had a bad day at work, let's try and normalize these conversations. And indeed, I would put the focus on fathers and I would request कि जो mothers हैं वो please जाके fathers को टोके नहीं जब वो ये कर रहे हैं. Number 3, हम हमेशा कहते हैं he is the head of the table or the head of the house और the करता धरता. क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि when the family feels that the boy of the house doesn't want that much financial pressure, would the rest of the family rise to the occasion and build up that financial need and security? और 4th reason, हमारा culture. हम रोज टीवी पे देखते हैं किस तरह हम अपने लड़कों को दबंग दिखाएं और किस तरह हमारी एडवर्टाइजिंग में लड़के होते हैं मैचो. But how can we really change that? Can we actually make our advertisers, our TV directors and films and serials more accountable? It should be kept in mind that boys, at the end of the day,
will become personalities of the kind of characters they watch. And finally, I'd like to give you my own perspective. I'm the mother of a 6-year-old and a 3-year-old. Sabse pehle, I love to talk to my son about how he's feeling. I ask him questions. In fact, I have a book which says, "Let's talk about your emotions." मैं उससे इस बारे में बातचीत करती हूँ कि वो जब कोई कैरेक्टर के बारे में पढ़ता है या फिर वो कोई एस्पेक्ट, ऐसे कोई इंसिडेंट देखता है, तो उसे उसके बारे में कैसा लगता है. As an example, my son loves to watch Mahabharata and he also reads it in the various comics. जब वो महाभारत पढ़ता है तो मैं उससे पूछती हूँ, भाई तुम्हारे को अगर कोई एक कैरेक्टर इसमें से पसंद है तो वो कौन सा है और क्यों? उसका जवाब मुझे आता है कृष्णा. क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रेंडशिप्स रखता है. Now, when we look at just his response, it isn't really about the fact that, I like Arjun or Abhimanyu because they go out there and kill people. He somehow noted, and this is his own perception, कि हमको friendships रखनी चाहिए. When I have these conversations with him, I can get to know the kind of person my son is. Secondly, I have a son and a daughter. So in that, I often see that they both fight. And it's my endeavor to ensure that when my younger daughter hits my elder son, I do go out there and correct it carefully. Because often I have seen my 6-year-old son come to me and say, "मामा देखो, मेरे को मेरी बहन ने मारा और उसने मेरी खूब पिटाई करी और मुझे बहुत बुरा लगा इस बारे में." So I like the fact that he came and expressed that he was sad, and what is my responsibility? I go back to him and to my daughter and I try to make it good by letting my daughter know that she has no right to hurt the feelings of my son. And finally, what can you change going forward? Well, I would just say it's not easy for any men to unlearn everything that they've been conditioned with. But I think we all as society, as family and friends can make a huge difference by encouraging men around us to talk. Whether they're your sons, your brother-in-law, your son-in-law, your husband, your brothers, have more conversations about feelings. Let's just encourage them to talk about who they really are and how they feel. Don't dismiss them and don't encourage them to be strong or macho. Give them a moment of your time and listen in.